Good morning, students. Class 7th Science, and today's topic: what causes winds? Moving air is called wind. Air moves from area of high pressure toward to areas low pressure, causing wind. The intensity of wind depends upon the difference between the high and low pressure. The greater of the difference in the pressure and greater the speed of the wind blow. तो विंड का जो स्पीड है वो डिपेंड करेगा उसके प्रेशर पर। अगर प्रेशर तेज़ है तो विंड की स्पीड भी ज़्यादा रहेगी, अगर कम रहेगा तो फिर इट राइजेज अप ए जेंटल ब्रीज, तो हल्की हवा बहेगी। विंड डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट पाथ, इट इज़ द फॉर्म ऑफ स्पायरल। द स्पायरल मूवमेंट ऑफ विंड इज काज टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो विंड कभी स्ट्रेट नहीं फ्लो होता है, इसका स्पायरल पाथ होता है। और स्पायरल पाथ का कारण क्या है कि अर्थ रोटेट करती रहती है, इसलिए। इन हाई प्रेशर एरियाज wind spiral downward to flow the outward of the surface. In low surface areas, air spiral towards at the earth's surface. Air continues to move upwards in a spiral. So in high pressure areas, air upper region spiral outwards of the on the surface, and low pressure areas, air form a surface spiral upward. Here move this, or here comes like this. The slight difference in air pressure makes air is or surrounding area move. Hold a narrow strip of newspaper and sewn. Place your mouth close to point A over the paper strip and below the vigorosity. Observe how the paper strip behave. Upward Y. When you blow vigorously over the paper strip, you move the air above the strip. This creates to low pressure area above the paper, so air below paper strip move upward, raising the paper upwards. You will need a sheet A4 size papers and drinking straw. Fold the sheet of the paper lengthwise and half make to the paper tent. Keep it on the table and with the help of a straw blow vigorously into the tent. What do you observe? You will be notice that the tent flattened. This happened because the moving air creates low pressure inside the tent. The higher pressure on the outside of the paper flattened the tent. Coastal wind. Wind flow region to higher pressure to region to lower pressure. ड्यूरिंग द डे लैंड हीट इज़ फास्टर दैन वाटर। दिन के समय लैंड वाटर से जल्दी से हीट हो जाता है। द वार्मर लैंड नियर टू द कोस्ट एरियाज राइज रिलेटिवली लोअर एयर प्रेशर। ड्यूरिंग द डे द सी ऑफ वाटर कूलर दैन एयर अबव द डेंसर। देयरफॉर द प्रेशर ओवर द सी रिलेटिवली हाई ड्यूरिंग द डे, दैट द वाई during the day wind blow from the seawards on land. At night land cooled faster and the sea water warmer than land. That is why the surface of sea has lower pressure than the coast. Therefore night of wind blow from the land toward the sea. नाइट में क्या होता है, लैंड जल्दी कूल हो जाता है, वाटर सरफेस हॉट होता है, तो वहाँ से वहाँ की एयर जो रहती है वो हल्की होकर ऊपर चली जाती है, और जो लैंड की एयर होती है वो सी सरफेस पे आ जाती है, और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, देयरफॉर नाइट विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी। द कोस्टल विंड्स affect small region close to the coast. However, the weather system can be large enough to cover half of the continent. Uneven heating region around the equator and pole give rise to the winds. The region close to the equator receive maximum amount of heat and sun. The air in these regions to warm and rises. The cooler air rises at 30 degree latitude to either other side of the equator below toward the sun, shown in the diagram. The air poles of the cooler than the around 60 degree latitude
and the warm air around 60 degree latitude rises, and cold air to the polar region blow toward the region around 60 degree latitude. Wind move, clouds bring rain. During summer, the intense of heat evaporate huge quantity of water from the ocean, and the water vapor thus form rises, cools and upper atmosphere, condenses into the water droplets and form a clouds. Thus, in summer, dense cloud from over the oceans. Uneven heating the land. Summer generates strong monsoon wind in the southwest direction in Indian Ocean toward the mainland. These wind to rain most part of the country month of जून जुलाई अगस्त. तो मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त में समर सीजन में वाटर वेपर राइजेस होता है और जिससे ढेर सारी वर्षा होती है. डिड यू नो वाई क्लाउड थंडर? Lightning produces huge amount of heat energy. The lightning heats the air to such a high temperature that the air intensely expands. The sudden expansion of air produces vibration, which we hear as thunder. Thank you, student.